Okay, so now we are going to start another important disease in Unit 4, and it's the last disease that is cancer. And I think every one of you knows what actually the cancer is. And someone is asking for admit. Yes, Abhishek, you want to say something? Abhishek Mago, you have raised your hand. Okay, maybe by mistake. Okay, so in Unit 4, we have discussed about these disease, what actually the IBD, what are the different types of IBD, what is the etiology of IBDs, and what is epidemiology, and what is pathogenesis of intestinal bowel disease, and how we are diagnosing the IBD, what treatment we are providing, treatment little bit, not much detail, jaundice, and what is the etiology of jaundice, what is the pathogenesis, how we are diagnosing the jaundice and treatment. Hepatitis, we have discussed types of hepatitis, etiology, different types of hepatitis B, C, D, E, and pathogenesis of hepatitis along with its clinical finding on different stages. Diagnosis, how we are diagnosing the hepatitis, how we can prevent it and treat. Then we have discussed about ALD, that is alcoholic liver disease, and what are the etiology, what are the different types of alcoholic liver disease. And we have discussed about pathogenesis of AFLD, alcoholic fatty liver disease, then hepatitis, and how ethanol is metabolized. We have discussed, and what happens when someone is taking excess of alcohol or frequent alcohol. And we have discussed how to diagnose the alcoholic liver disease and what treatment we are providing. In last class, we have discussed about disease of bone and joint, and in these we have discussed about different types of arthritis, and based on sign and symptom, how we can differentiate. So we knows about osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and gouty arthritis. So these are the main arthritis, and what are their etiology? We have discussed epidemiologies. Women are more prone, and it can rheumatoid arthritis can happen at any age, whereas osteoarthritis is a old age disease. Pathogenesis, we have discussed about osteoarthritis and its clinical findings, and rheumatoid arthritis, its pathogenesis and clinical findings. And we have discussed about the gouty arthritis, where uric acid is deposited in the joints. We have discussed about the how we are diagnose the patients with arthritis based on symptoms and with blood test. And then we have discussed about the treatment little bit, what treatment we are providing. So DMARD we are providing for a rheumatoid arthritis, steroid also, biological agents if the patient is not responding to these drugs. And the SAIDs we are giving, xanthine oxidase inhibitor we are giving for the uric gouty arthritis, and physical therapy has a role, and then surgery. Now today we are going to discuss about cancer, and cancer is one of the serious disease, serious major illness, and year by year, cases of cancer are increasing, and different types of cancer is there, and you can see what actually the cancer is. Cancer is a disease in which some of our body cells grow uncontrollable manner and spread to other part of the body, so that we called a cancer. That is uncontrolled manner when cells are divides and cells are grow and spreading to other part of the bodies, that we call a cancer. And cancer can start almost anywhere in the human body, because our body is made up of the cells and made up of trillions of cells. So cancer is a disease in which our body cells grow in an uncontrollable manner. So it can happen to any side of the bodies. It can happen to the lungs, it can happen to the colon, it can happen to the liver, it can happen to the kidney, anywhere it can be happen.
So this we call a cancer, and the etiology, what actually the reason for the cancer. Of course, there are a genetic factors, but again, genetic factor is not responsible for 100% of cancer. There are many environmental factors, and again, environmental factors like pollutions, your radiations, our diet, unhealthy diet. These all are the contributors for the development of cancer. And you might be surprised to know that the most means around 50 to 60% of the cancer are preventable, and these cancer are emerging in our populations due to their habits, due to their habit of tobacco, due to their habit of smoking, due to their habit of wrong diets. So all these contribute for the development of cancer, and these all can be preventable. Tobacco, we can stop the use of tobacco, and any form of tobacco is responsible for development of cancer. So these are the, because we know the reason, and some of the cancer we don't know the exact reason, so we are not able to prevent them. But the cancer where we know the exact reason, like tobacco, we know the smoking results in a lung cancer. But if you do the survey, you will find in our countries there are many, the large group of population is doing the smoking, large group of population is consuming the alcohol. When we have discussed about alcoholic liver disease, you have find that we have discussed about different stages of liver, right? There is a liver cirrhosis, and then liver cirrhosis can convert into liver cancer. First is fatty liver, and then it can convert to these liver cancers also. So these all are the reasons and factors which are responsible for the development and increased cases of cancers year by year. Diet is also one of the factors. The food from the outsides, and in that food, these restaurants or these are preparing, during the preparations they are using some dyes, color, and these results in the cancer. These can alter your cell divisions, and the cell can divide in an uncontrollable manner and do the formations of cancer. Obesity is, of course, is a risk factor for many disease, and there are some chemicals arsenic is particularly contaminated in the groundwaters, and particularly when you will do a survey, and you will find that in India, in West Bengal regions, or these particular, there is a groundwater is contaminated with the arsenic, and there is a high incidence of cancer. Nitrosamine, trichloroethylene, ethylamine, benzopyrene, aflatoxins, pesticides, excessive use of pesticide is results in the development of cancer. The viruses, of course, some viruses, hepatitis B, the hepatitis, if it's a untreated, it results in the development of liver cancer. We have studied when we have studied about hepatitis B and hepatitis C. So these are the reasons for the development of cancer. Uh, about the etiology, epidemiology, if you see the cancer, as per the WHO, cancer is the leading cause of death worldwide and accounting for nearly 10 million deaths in 2020. It's a 2020 data, and 10 million deaths in 2020. And cancer can happen at any age. It's not of older age disease or young disease. It can happen in children also. We have seen they are detected with the cancer. Now, maybe question is arise in your mind is, sir, as you have told, the etiology of the cancer is diet, pollution, this thing, that thing. But children, if one child is detected with cancer and it's of 1 year old or 2 year old, so in that one, how very less exposure is happened to the environment. So how this child is developing the cancer. So as I told you, these are the contributing factors. Some are the genetic reasons also,
And in children, we are seeing the blood cancer cases are much more. And in children, cancer pathogenesis is different as compared to young cancers. So if you see the children's cancers are fast growing, and they are fast responding to the chemotherapy, because these cancer are fast growing, and when you will start a chemotherapy, they will respond faster. And in children's, as they are not suffering from the comorbid conditions, like they don't have diabetes, hypertension, they don't have any other comorbid conditions which can complicate, which obviously complicate the treatment of cancer. So the patients with diabetes, hypertension, kidney problems, this problem, liver problems, and the person have a cancer, and when you are doing a treatment, it will affect much more. It will not respond to that much faster as the children can do. So that is the one means positive points about children. If children are detected with cancer, so there is a more chances to recover faster as compared to the persons who are detected at the later ages. But of course, it can happen at any age, and the types, as I told you, cancer can happen at any part of the body. So it can happen to the breast, and breast cancer cases are increasing much more. Lung cancer, I have just included the most common cancers which we are observing in our population. Breast cancer incidence is very high. Lung cancers due to smoking, cervical cancer due to hygienic conditions, oral cancer due to tobacco consumptions, blood cancer due to genetic factors, prostate cancer, esophagus cancer, liver cancer, pancreatic cancer. There are so many cancers are there. So there are, but these are the more common cancer which we are observing in a populations. Breast cancer cases prevalence is much more, right? Pathogenesis of cancer, as I told you, cancer means uncontrollable divisions of cells and spread to the other part of the body. If you have read about the tumor, we are classifying the tumor into two categories. One is benign and another one is malignant. So malignant tumors means it will spread to other part of the bodies. So that can be a cancerous, right? So pathogenesis, as I told you, arises from a transformations of normal cells into a tumor cells. Means our normal cells transformed into a tumor cells in a multi-stage process. There are different stages by which these normal cells convert into tumor cells, and that generally progress from a pre-cancerous lesion to a malignant tumor. So as I told you, benign to malignant, and these changes are the result of, and why these changes are happens. As I told you, these changes are a result of interactions between a person genetic factor and external agents. And external agent, whatever we have discussed, viruses, your pollutions, smoking. So these all are the external factors. When it interact with the genetic factors, it do the changes and converts normal cells into a cancerous cells. So if you see little with mechanism pathogenesis of these cancers, you will find there is a, because there is changes in the cell cycles or growth of the cells. So there is a mutations happens, and that mutation, when environmental factor interact with genetic factors, so what will happen? These environmental factor will do the mutations, and that mutations will inactivate the tumor suppressor gene. In our body, there is a tumor suppressor gene. So these mutations will inactivate these tumor suppressor gene, and what will happen as a result of their cell proliferate much more, and mutations also inactivate DNA repair gene, and mutations of proto-oncogene create an oncogene. So this proto-oncogene will convert into oncogene, and mutations also inactivate several more tumor suppression gene. So much more suppressions of tumor suppressor gene, and ultimately this uncontrollable cell divisions or cell growth will happen. So you can see in the picture the uncontrolled, and it will spread to the other parts of the body. You can see a little bit more explanations in this figure. The normal cells, in our body, cells are grows, and after a certain time, these cells are die, and with the process of phagocytosis or apoptosis,
these cells will be removed from the bodies, right? As you know, apoptosis is a physiological process. So it will be removed from the bodies and successfully repaired DNA damage. But when the, this environmental DNA damaging agents like chemicals, radiations, particularly the radiations which we are using in a diagnostic purposes. So that's why in COVID time, so many patients are going for a diagnosis, and again they are going for a scanning. So it's unnecessary scanning is not required, because in scanning process radiations are used, and that radiations could do the changes in the cells, and that could develop a cancer also. So whenever required, if diagnosis is required, then after 1 week, again unnecessary diagnosis, unnecessary testing you are doing, then it could do the damage. Viruses, of course, as I told you, hepatitis B and hepatitis C virus are the one of the major reason for the liver cancer. Cervical cancer, also papilloma virus is the reason. Cervical cancers in ladies are increasing. So you can see there, then DNA damage and failure of DNA repair, then mutation in the genome of somatic cells, and then activation of growth promoting oncogenes activations will happen, and suppressions of tumor suppressor gene. So alterations of gene that regulate apoptosis, inactivation of cancer suppressor gene, ultimately these all processes will result in the expression of altered gene product and loss of regulatory gene products, and then clonal expansions, additional mutations, progressions, and heterogeneities, and malignant neoplasm. Malignant, it will spread to the other part of the bodies, right? Inherited mutation, gene affecting DNA repair, DNA affecting growth of apoptosis. So this is the pathogenesis. In pathogenesis of cancer, you can write about, because in your syllabus, it's not described it's not written, mentioned about particular type of cancer. They have written about the cancer. So in cancer, there are so many cancers, means breast cancer, but of course their pathogenesis is same, because cells are there is changes in the genes, mutations in the genes, and results in the uncontrolled differentiations, uncontrolled spread. So its mechanism is similar in every cancer. So diagnosis, based on symptoms, it's very difficult to diagnose. And particular problem in cancer is late diagnosis. You might have heard about, whenever the patient is detected with cancer, the physician say it's too late. It's a last stage. It's a very advanced stage. So now we can't do much more. They immediately start the chemotherapies or other treatment procedures, and in most of cases we have seen the patients which are detected with cancer, there are very less chances of survivals. There may be 1 year, 2 years, 3 years, and the reason is late diagnosis. And late diagnosis, why it's happening? Due to ignorance also, and due to also the overlap of the symptoms with other disease. Yeah, just I have included some symptoms like weight loss. When there is a unexplained weight loss, means you have done all the testing, and you are not able to find why this person weight is decreasing. So you can think of maybe it's might be a you can rule out for a cancer also. Nodule formation is one of the signs of cancer. Changes in skin colors, these are some of the symptoms. But again, practically, when patients are getting these kind of symptoms, they are ignoring. Even when the patient is visiting to the physician is also giving the treatment for the other disease, but we are not able to detect it, whether it is cancer or something else. Complete blood count is helpful, particularly when we are going to rule out a blood cancer. So there is a we can see the blood profiles, WBC's profile. Imaging techniques, we are going to do like CT, MRI, and PET, where we would like to see, particularly if there is a cancers in a bones or in spinal. So these imaging techniques helps.
But of course, the gold standard for the detections of cancer is biopsy. The test which will tell us about whether this person have a cancer or not, that procedure is biopsy. And we have discussed about biopsy, what biopsy is. If you remember, we have discussed actually what we are doing in a biopsy. Biopsy means we are collecting the particular part of the tissues, and then we are examining under the microscope, and from that one we will get an idea, okay, these cells are cancerous or non-cancerous. So biopsy is a gold standard for the detections of cancer. Then preventions and treatment in cancer. How you can prevent the cancers, if particularly by the vaccinations. And as I told you, hepatitis B and C viral infections are responsible for the liver cancer. Of course, alcohol is also the reason for the cancer formations. And if you remember, when we have discussed about hepatitis, we have discussed hepatitis B vaccine is available. So you have to vaccinate every child for a hepatitis B, because it could result in a cancers also. So vaccinations is there, but if you ask me about a cancer vaccine, we don't have a cancer vaccine for liver cancer. Research is going on, and we are hopeful that we will get vaccines for the cancer, so our populations will not get these cancers, particularly due to genetics. And healthy food, as I told you, unhealthy food is also the one of the reason for the development of cancer. You might have heard many news nowadays that someone of 40 year of age, 35 year of age, 45 is detected with a cancer. So if you try to find out why this person's at this particular age is getting cancer, then you will find about there is a unhealthy food, unhealthy lifestyles. See, healthy lifestyle or good habits of eatings will not only help you to protect from the cancer, but from all the disease. So we have to follow it. Many times I have stressed on it, and you have to be educate everyone. There is and particularly if someone is detected with a cancer, you can understand there will be very panic situations in that family. Everyone is panic. So it's very easy to write, don't be panic. What is it practically? Is it so? No. It's if someone will be detected with the cancer, of course it's a very panic situations for everyone. And particularly apart from a leukemia or blood cancers, there is you can do the you can wait for 4 or 5 days, where you can take the decision with respect to treatment. You can think about, okay, if someone is detected with cancer, so now which one is the suitable, comfortable place or hospital for us to start the treatment. So you can take a time. Don't be that much panic that you are rushing here and here, and because within 1 days or 2 days it will not spread that much. That much means it will not spread. No need to worry for 1 2 days or 3 days. If someone is detected with cancer, now you are very hurry. Means if you are delaying for 1 days, it will create a huge problem. No, it will not create. You can take a time for 4 or 5 days, but not 1 month or 2 months. But of course 3 or 4 days, where you can decide which hospital is best for or comfortable, and then you can start the treatment. But except for blood cancer is something where you should not wait for even for 3 or 4 days also. And we are doing the operations where we are removing these cancerous cells, and with combinations of radiotherapies and chemotherapies, these drugs we are using, which kills the cancerous cells. But problem with cancer, as maybe many of you have heard about, the treatment which we are giving in a cancer is also doing lot of adverse drug reaction, lot of side effect. And the reason is why it is so, because when you will compare these cancerous cells with normal cells, it's very difficult to differentiate between these two. And the drugs which we are using,
These are not very much specific that they will kill only the cancerous cells. We are assuming theoretically, but when we are giving to the patients and when patients are taking, it doing the harm to the normal cells also, and normal cells are damaging. And with the result of that, we are getting a lot of ADRs. Earlier, what we are using in a cancers have very high ADRs, but now we have specific treatment, specific drugs, which will kill the cancer cells. Not only, but yes, means that are more specific as we have earlier the treatment. So with the advancement in the science or technology, we are able to create the formulations of the drugs where they are killing only the cancerous cells. Immunotherapy is also the one of the techniques which we are using in a cancer. And immunotherapy, as we have discussed immune system so many times, and what actually the immune system is, the most important function of the immune system is to recognize and then activate. But first thing, the immune system's function is to recognize whether this is self or non-self. So scientists have thought of, okay, and our immune system has a amazing power to kill anything. So scientists have thought of, okay, when these normal cells are changes, so why not our immune system is able to detect it? Because when normal cells are converting into a cancerous cell, so our immune system should able to detect it. And if it's not detecting, so we have to make our immune system in a such a way that it will detect the cancerous cells and kill the cancerous cells. But unfortunately, our immune system is not able to recognize it naturally. If our immune system is able to recognize these changes when these normal cells are transforming into a cancerous cells, most of the problem will be solved with respect to cancer, because our immune cells will kill these cells. Whenever these are our normal cell is going to convert into cancer, our immune system will sense it and kill it by releasing these chemicals, all these weapons. But unfortunately, it's not so. So scientists have created some immunotherapy where in simpler way, what I would say, they are trained our immune system to sense these cancerous cells and kill these cancerous cells. So that we call a immunotherapy, immuno-oncology, where they activates the immune system against the cancer cells. So this is about the cancers. If anyone has any questions, please ask. I think I have not told in Hindi. So in Hindi, if I would say cancer, कैंसर क्या है, क्या बीमारी है कैंसर, आई थिंक सबको पता है कि कैंसर्स में क्या होता है कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स आपको पता है नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, सेल्स बनते हैं बॉडी में और फिर वो जैसे आरबीसी बने 120 दिन बाद वो हमारी बॉडी से रिमूव हो गए, फैगोसाइटोसिस हो गया, एपोप्टोसिस हुआ और सेल रिमूव हो गए बॉडी से, फिर नए बन गए, ऐसे हमारा प्रोसेस चलता रहता है। अब कैंसर में क्या होता है कि जो हमारी ये सेल्स वाली मशीनरी है इसमें डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट ऐसा आता है कि अनकंट्रोल्ड डिफरेंशिएशन हो जाएगी सेल्स की और वो स्प्रेड होने लगेगा पूरी बॉडीज में, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। और क्योंकि ये सेल्स को इफेक्ट करता है और सेल हमारी बॉडी में हर जगह है, तो ये कहीं भी हो सकता है बॉडी में, तो इसलिए कैंसर के बहुत सारे टाइप्स हैं, किसी कहीं भी हो सकता है, राइट। तो रीजन बहुत जरूरी है समझना कि होता क्यों है कैंसर। ये अब इसमें एक्चुअली एग्जैक्ट रीजन हमें अभी तक नहीं पता, बट हम अज्यूम करते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कि कुछ पर्सन जो उनके जीन में ये म्यूटेशंस हैं तो वो मोर सस्पेक्टेबल है। बट जो हमारे जेनेटिक फैक्टर किसी भी डिजीज को डेवलप करने में अकेले नहीं करते हैं रोल ज़्यादा प्ले, जब जेनेटिक फैक्टर हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब वो किसी डिजीज का रूप लेते हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? पोल्यूशन है, पोल्यूशन इंक्रीज, जैसे हमने ऑटो इम्यून डिजीज में भी पढ़ा था। रेडिएशन से आप बार बार एक्सपोज हो रहे हो। तंबाकू जो कि हमारा इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और प्रॉब्लम यहाँ तक हो गई है कि मीन्स किसी भी फॉर्म में अगर तंबाकू ले रहे हो तो उससे कैंसर हो सकता है। फिर ये बात नहीं आती कि
मैं तो एक ही मतलब कम अमाउंट ले रहा हूँ या ज़्यादा ले रहा हूँ, इट विल रिजल्ट इन ए कैंसर। और ओरल कैंसर की इतनी प्रॉब्लम है, और हमें पता है कि ये तंबाकू की वजह से है। और जो मैं आपको बोल रहा था कि 50-60% जो कैंसर हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, और इनके केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि हम अपनी आदतों से मजबूर हैं। और बहुत सारे रीज़न भी हैं जो मैं मानता हूँ कि अगर आप क्या बोलते जो भी ये हैं तंबाकू की या पान पराग, ये वो जो हमारे जो हीरोज हैं वही इतनी ऐड करते हैं इनकी, जिससे हमारा यूथ जो है वो उसके लिए मीन्स वो होता है, अट्रैक्ट होता है कि ओके भाई ये खा रहे हैं, क्योंकि वो जो ऐड कर रहे हैं वो खुद तो खा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ दिखा रहे हैं। और ये सब मीन्स बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी में भी आप लोग ये भी सोचते होंगे कि ओके सर तंबाकू आप बोल रहे हो, तंबाकू है, सिगरेट है, और ये सब जो है वो किसी भी कंट्री के ऊपर हेल्थ बर्डन जो होता है, वो बर्डन बढ़ता है किसी भी कंट्री पे, इकोनॉमिक्स पे। तो हम इनको बंद क्यों नहीं करते हो? अगर गवर्नमेंट पूरी तरह सिगरेट बंद कर दे, कोई सिगरेट पिएगा ही नहीं। अब उसके बहुत सारे रीजन हैं, अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या उनसे देखें तो उनको उनसे काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है, जिससे वो बोलते हैं कि हम ये चलाते हैं। बट हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, और मेनली अगर पब्लिक ही जागरूक हो जाएगी, अगर वो यूज करना नहीं करेगी, स्टार्ट नहीं करेगी, तो उनको आदत नहीं पड़ेगी। आदत नहीं पड़ेगी तो आपके ऑटोमेटिकली बहुत सारे कैंसर जो हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगेन मीन्स बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। और कैंसर जो आजकल मीन्स हर महीने में आप एक ना एक केस अपने आसपास जो भी आपके कांटेक्ट में है उसमें सुनने को मिल जाएगा कि उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया। फिर आपको समझ में आएगा अरे इतनी एज में ऐसे कैसे कैंसर हो गया। पर दीज आर दी फैक्टर्स। रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस का ओके, कोई ना तंबाकू पीता है, ना स्मोकिंग करता है, ना अल्कोहल पीता है, फिर भी उसको कैंसर हो गया, क्योंकि वो उसने क्या किया कि वो स्कैनिंग, कई लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी हेल्थ के लिए, और डॉक्टर चाहे लिखे ना लिखे खुद ही वो क्या बोलते हैं आपका ये सब डायग्नोसिस के लिए चले जाएंगे कि मैं ये स्कैन करवा लेता हूँ, मैं वो स्कैन करवा लेता हूँ, अननेसेसरी, जो कि ज़रूरत नहीं है। तो इन स्कैन में आपकी रेडिएशन से बॉडी एक्सपोज होती है, तो बार बार एक्सपोज होना अच्छी चीज नहीं है। जो आपका HRCT जो कोविड में कर रहे थे कि हाँ चेस्ट स्कैन कर रहे थे, तो फिर आपको उसमें स्कोर पता चल गया। अब आप 1-2 महीने बाद करवाओ, जब आपका मीन्स आपको कोई अब प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, पर फिर भी लोगों को देखना है कि मैं कितना मेरा लंग्स रिकवर हुआ, क्या हुआ। तो वो अननेसेसरी चीजें जो है वो रिजल्ट लेती हैं ये सब डिजीज के लिए। पॉल्यूशन, ऑफ कोर्स पॉल्यूशन इज द वन ऑफ द रीजन। डाइट पॉल्यूशन ठीक है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, मीन्स हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एट इंडिविजुअल लेवल। बट एक बाहर इन्वायरमेंट में जहाँ आप रह रहे हो, तो पॉल्यूशन के थ्रू जब आप एक्सपोज होते हो तो वो बहुत मुश्किल होता है कि आप उससे बचें। बट डाइट जो है, डाइट जो जैसे मैंने बताया कि डाइट आजकल ट्रेंड बन गया है कि बाहर से खाने का। और पहले जमाने में क्या होता था कि जब बाहर खाने के लिए जाते थे या बाहर से खाना मंगाते थे, तो वो पूछते थे कि कोई बीमार तो नहीं है घर में, कि आज घर पे खाना नहीं बना, कि कोई बीमार है घर में क्या, कि आज कोई बना नहीं पाया तब बाहर से। पर आजकल तो इतना ट्रेंड है कि हर फ्राइडे हर सैटरडे बाहर से। और आजकल इतना वो भी हो गया है, इजी मंगवाना खाना, कि ये ऐप वो ऐप, स्विगी से मंगाओ, जोमेटो से मंगाओ, ये मंगाओ। पर आपको सोचना चाहिए कि जो ये चीजें यूज करते हैं जस्ट फ्लेवर के लिए, कोई डाइज यूज करता है, कोई कुछ यूज करता है, तो ये कैंसर, और ये इमिडिएटली कैंसर डेवलपमेंट के लिए टाइम लगता है। अब आपने खाना ये शुरू किए हैं, 45 साल में कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो आदत डालना किसी भी चीज की, इस तरह की आदत डालनी ही नहीं चाहिए। और ये सबसे खुद भी बचो, और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव, अपने जो आसपास के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा उसके लिए जागरूक करो। ओबिसिटी तो हमारी अब प्रॉब्लम बनती जा रही है, और वो सीधा खान पान से रिलेटेड है। कुछ केमिकल्स हैं जो कि कैंसर काउज करते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। अब में भी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि सर आप मतलब ओके, खाना हम समझ गए कि फल फ्रूट खाने चाहिए और
सब्जियां खानी चाहिए, ये खाना चाहिए। बट जो सब्जियां मिल रही हैं, दूध मिल रहा है या जो भी चीजें मिल रही हैं, इनमें तो इतने सारे टॉक्सिन मिल रहे हैं अब, इतने ज्यादा वो पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, जिसके हम फल फ्रूट खाते हैं पेस्टिसाइड भी जा रहा है, तो वो भी तो कैंसर कर सकता है। तो अब इस पे मीन्स कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो पेस्टिसाइड्स को। तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट में रह रहे हो, आपको चीज़ें तो खानी ही है। बट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जैसे आप मार्केट में गए, तो आपने कहीं फल फ्रूट लेने गए या सब्जी लेने गए, कोई फल फ्रूट मतलब बहुत शाइनिंग कर रहे हैं आजकल, जो शाइनिंग चीज़ है वहाँ लोग भागते हैं। कि कोई जैसे सपोज कोई सब्जी है या कोई चीज़ है, वो बिल्कुल शाइन कर रही है, ऐसा लग रहा है अरे वाह, मतलब अभी तोड़ के लेके आया है वहां से, क्या बोलते हैं, खेत से। तो वैसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, बिकॉज दीज आर कोटेड, वो उसमें सोल्यूशन में डिप करके वो शाइनिंग की गई है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हमें समझने चाहिए। और पॉपुलेशन का क्या है कि वो अट्रैक्टिव हैं चीजें, तो उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल फ्रेश है, तो वो जाएंगे। आजकल वो जो भी मीन्स जो भी फ्रूट्स के लिए अलग दुकानें हैं, इसके लिए अलग हैं, तो वहाँ बिल्कुल वो चमक रही हैं, सब्जियां भी चमक रही हैं, फल फ्रूट भी चमक रहे हैं, सेब हैं वो भी ऐसे साइन कर रहे हैं कि बस बिल्कुल ये लग रहे हैं। तो ये शाइनिंग चीजें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। आपको नॉर्मल, जो नॉर्मल वेंडर है, जो चीजें शाइनिंग नहीं कर रही हैं वो चीजें आप खरीदेंगे, तो कुछ हद तक एक्सपोजर कम होगा। और फिर आके वो एक दो तीन बार धो लेंगे तो पेस्टिसाइड का एक्सपोजर कम होगा। पर ये कम्प्लीटली कि पेस्टिसाइड की खाने में, उसमें पेस्टिसाइड, आप खाना तो नहीं छोड़ दोगे ना, सब्जियां तो खाना नहीं छोड़ दोगे। ओके। सो एपिडेमियोलॉजी, कैंसर से डेथ तो है, काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हैं, और बहुत मुश्किल होता है पेशेंट्स को बचाना कैंसर में। और इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारी लेट डिटेक्शन होती है, और उस स्टेज में फिर बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट ऑफ कोर्स अगर अर्ली डिटेक्शन हो और सही से ट्रीटमेंट हो तो पेशेंट्स बचते भी हैं और नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं। टाइप्स में बहुत सारे कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, लंग कैंसर हैं, सर्वाइकल्स हैं, ओरल हैं, ब्लड है, प्रोस्टेट हैं। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और इसके भी बहुत सारे रीजन हैं। हेलो। यस। ओके। 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 ओके मैम। या यस 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 हैव, डू यू हैव माय ईमेल आईडी? ओके। ओके ग्रेट। यस यस, BITMESRA@gmail.com, yes, perfectly fine. Yes, yes, it's on WhatsApp. You can, yes. Sure, sure, ma'am, sure. Thank you. सो सॉरी। सो ये आपके बहुत सारे कैंसर हैं, और इसमें से काफ़ी कैंसर हैं जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एजुकेट एजुकेट करना, मुझे कई बार लगता है कि किसको नहीं पता कि बाहर खाने से या सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होता, किसको नहीं पता कि अल्कोहल से लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर खराब होता है, सबको पता है। पर फिर भी वो चीज़ें करते हैं, क्योंकि इसके जो पीछे रीजन है वो बहुत सारे हैं। एक तो हैबिट, जो मैं आपको बोलता हूँ, किसी की हैबिट को चेंज करने के लिए आपको वो एक्टिविटी 21, जो साइंटिफिकली बोलते हैं 20 to 21 डेज, अगर आप ये करते हो तब वो हैबिट आपकी छूटेगी। ये नहीं एक दिन या एक हफ्ता, तो वो आपकी हैबिट नहीं छूटेगी। और हमें पता, आपको खुद ही पता होता है कि मेरी ये हैबिट खराब हैबिट है। पर क्या आप इतना भी डिटर्मिन नहीं हो सकते कि 21 डेज के लिए मुझे ये हैबिट नहीं करनी है? और जब आप ये करोगे, तो 21 डेज के बाद आपकी बॉडी जो है वो अलग चीज के लिए अडेप्ट हो, फिर आपका वो मन करेगा ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं। पहली तो बात होती है कि पहले स्टार्ट ही मत करो। जैसे मैं इतनी बार बोलता हूँ, आप लोग सब यूथ हो,
और अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में हो, तो आप लोग अट्रैक्ट होते होंगे सिगरेट स्मोकिंग के लिए, अल्कोहल के लिए, इसके लिए और चीज़ों के लिए। तो वो सब चीज़ों के कंसिक्वेंसेस आपको समझने चाहिए। और मजे मजे के लिए वो मत करो कि मेरा फ्रेंड करता है तो मैं भी कर लूँ, ये भी करो, बल्कि आपका जो फ्रेंड करता है उसको भी मना करो। क्योंकि अभी आप लोगों को इस एज पे समझ नहीं आती चीज़ों की कि अगर कुछ भी कोई भी चीज़ अगर फैमिली में या आपको कुछ भी चीज़ डिटेक्ट होती है, कोई डिजीज, तो उससे पूरी फैमिली कितनी डिस्टर्ब होती है, ये समझ नहीं आती अभी पर। जब तक आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड एट अर्ली। पैथोजेनेसिस हमने पहले मैंने बता ही दिया कि आपके नॉर्मल सेल जो हैं वो ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, और आपके जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जो आपके कंट्रोल करते हैं डिफरेंशिएशंस और ग्रोथ को। जब ये सुप्रेस हो जाएंगे तो आपके सेल्स अनकंट्रोल्ड डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगे। तो म्यूटेशंस कैसे होती हैं, केमिकल्स की वजह से हो सकती हैं, रेडिएशन से, वायरसेस से, ये नॉर्मल प्रोसेस है। आई थिंक टाइम, वी हैव वेरी लेस टाइम। तो सिम्टम्स के बेसिस पे, बट यस मैं सिम्टम का ये कहूंगा कि कैंसर को अगर कोई चीज है, अगर मुंह में छाले पड़ रहे हैं और 1 महीने से पड़ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। कोई भी चीज है बॉडी में जो कि 15-20 दिन से, छोटी चीज है बट वो सही नहीं हो रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और ये हम, और बायोप्सी, मैंने बोला बायोप्सी इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड। बायोप्सी में क्या होता है कि आप जैसे मान लो, जैसे हमने कोलोनोस्कोपी भी पढ़ी थी, कि उसमें आपने क्या किया कि पर्टिकुलर पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो क्योंकि कैंसर जो है वो सेल की डिजीज है, तो आपको सेल्स देखने पड़ेंगे कि ये कैंसरस है या नॉर्मल सेल्स है। और प्रिवेंशन वैक्सीनेशन है, बट अगेन वैक्सीन, इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर की वैक्सीनेशन, इसका मतलब है जो वायरल इन्फेक्शन से जो हमारे कैंसर डेवलप हो जाते हैं, लाइक लीवर कैंसर, उनके लिए वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन प्रॉपर हो तो उससे बचा जा सकता है, हेल्दी फूड हो। और पैनिक, डोंट बी पैनिक, जैसे मैंने बोला कि 2 3 3 4 दिन के लिए अगर किसी को डिटेक्ट हुआ तो फैमिली टाइम ले सकती है पूरी काउंसलिंग के लिए, साथ में बैठ के आराम से तय कर सकती है। एकदम रश करने की जरूरत नहीं है कि एकदम भाग गए और फटाफट किसी भी हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो तो आपको एकदम बोलेंगे अरे कैंसर कैंसर कैंसर, तो इसको फटाफट फटाफट ये कर लो। उतना भागा दौड़ी की जरूरत नहीं है, आप टाइम लीजिए, हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल चूज कीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो और वहां पहुंचिए और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ये ट्रीटमेंट लंबा चलती है, तो हड़बड़ी में कहीं ऐसी जगह पे ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं है, फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है, काफी ज्यादा वो और स्ट्रेस बढ़ता है। और ऑफ कोर्स कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें साइकोलॉजिकली बहुत इफेक्ट पड़ता है, पेशेंट्स पे इफेक्ट पड़ता है, फैमिली पे पड़ता है। तो वो चीजें मीन्स देखनी होती हैं। उनको कितना मिनिमाइज किया जा सकता है, और मिनिमाइज किया जा सकता है ऐसा नहीं है। So it's about cancers now. I think time is already over. So any questions so far? Yes, sir. I want to ask something. Yes, yes, go ahead. So, can it be completely cured if it detected in early stages? No, it's not cured, but yes, of course, after operations or after these radiations or chemotherapy, means you have to be supervise the patients for next year, then next years. Then you have to see is there, because we have seen many cases where cancer re-emerged also, right? So cure is not possible, but yes, we can treat it, right? Okay, sir. Thank you. And any other one? Sir, what is the basic difference between carcinoma and sarcoma? What? What is the basic difference between carcinoma and sarcoma? Carcinoma means again it's a means a cancer which is uncontrollable cells. Sarcoma means your आपके Your voice is lagging. hello, hello. Yes, sir, you are audible now.
Yes, now any other question? And cancer, the cancer means नाम सुन के ही कैंसर से मतलब एक दिमाग में ही एक सेटबैक सा लगता है कि किसी को भी अगर कैंसर डिटेक्ट होता है, और इट्स ट्रीटमेंट इज आल्सो वेरी कॉस्टली। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा वो चलता है फंड रेजिंग का कि किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, अब 35 लाख 40 लाख कई करोड़ों में भी ट्रीटमेंट हैं जो बच्चों के कैंसर हैं। तो एक एक इंजेक्शन की कीमत इतनी ज़्यादा है, तो फिर आपकी कई एनजीओ भी हैं जो कि कैंसर्स के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। बट मेरा ये ओपिनियन है कि कुछ एनजीओ को में भी काम कर रहे होंगे, पर एजुकेट करने की भी ज़रूरत है पब्लिक को। और दूसरा कि अगर हम कुछ हद तक ये सिगरेट, अल्कोहल और तंबाकू, ये सब चीज़ें कुछ हद तक इनकी अवेलेबिलिटी जो है ये कम करें, तो अगर अवेलेबल चीज बहुत मुश्किल से होगी, तो तो उनका है कि जब आपके जो हीरो हैं वही प्रमोट कर रहे हैं ये सब चीजें, तो फिर क्या कर सकते हैं। इट्स वेरी बैड। और वो खुद खाएंगे नहीं और दूसरों को खिलाने के लिए वो करेंगे। वैसे ही आपका वो उनका हाल है जो कोल्ड ड्रिंक हैं जो ऐड करते हैं, वो खुद नहीं खाएंगे क्योंकि वो बैलेंस डाइट लेते हैं। जो आपके हीरो हीरोइन के जो डाइटिशियन हैं उनके अकॉर्डिंग वो डाइट लेते हैं कि कितना कैलोरी कंज्यूम करनी है, कितनी मेरे को बर्न आउट करनी है, सारी चीज़ें उन्होंने मेंटेन रखी होती हैं। बट प्रमोशंस और उनको पैसे के लिए वो ये एडवर्टाइज करते हैं। और उस चक्कर में क्या है कि जो हमारी जनरल पब्लिक है वो उनको देख के वो भी शुरू कर देती हैं वो सब खाना, और वो सब खा के फिर अपना बैलेंस जो है वो लाइफ का बिगड़ता है। ये हमें चीज़ समझनी चाहिए, और पता नहीं कब समझ पाएंगे। इवन एजुकेटेड भी, चलो ठीक है, जो एजुकेटेड नहीं है गांव में है वो ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं सब चीज़ों के लिए। बट इवन मैंने देखा एजुकेटेड लोग भी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा। और उनको पता है कि ये नहीं है, हेल्दी नहीं है, ओके ठीक है, 6 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार, ओके। बट हर वीक वो सब यूज, और आजकल कॉरपोरेट की वजह से वो ट्रेंड बन गया है कि सैटरडे संडे ऑफ है तो फ्राइडे नाइट को पार्टी होगी, और पार्टी में क्या होगा, वही सब होगा जो कि आपकी हेल्थ को खराब कर रहा है। तो ये चीजें एक्चुअली मेरा मानना है कि ठीक है, डिजीज किसी को भी हो सकती है। अब वो लोग क्या तर्क देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ खाता हूँ, सब कुछ ये करता हूँ, मेरे को आज तक कुछ नहीं हुआ, और तुम तो बहुत ज्यादा डाइट भी फॉलो। हेलो। हेलो। आई थिंक ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच and have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you.